Hello students, how are you to all? I hope all of you feel good. Stay safe at home children. Students, today I am going to teach you chapter number 5 of our social science book. And the name of the chapter is Governing Ourselves. Students, let us read our chapter. Here, get started is this. Given below are the legislatures of some countries. Read the clues and write the names of the country. Now first one students, Federal Assembly, Asia world's largest country. Which one? Russia. Write down RUSSIA. Russia. Now second one, Congress, North America, dollar. That means the USA. Third one, third fill in the blanks, diet, Asia, yen. And the answer is Japan. 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 Fourth one, National Congress, South America, football. Brazil. 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 Last fill in the blanks, National Assembly, Asia, Kabul. Write down last fill in the blanks, Afghanistan. Afghanistan. Okay, let's move students. Here, India is divided into 28 states and 9 union territories. You know very well, our India is divided into how many states? 28 states. That means in our India, there are 28 states and 9 union territories. So students, did you know why our India is divided into 28 states? Students, in our country, India is so big. That means our India is so big and it is not possible for a single government to understand and solve the problems of all the peoples. That is why after independence, our India is divided into 28 states and 9 union territories. Students, did you know what is our neighboring countries? Our neighboring countries, that means हमारे पड़ोसी देश. Yes, I know that. You know Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, China, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka and Maldives. These are the neighboring countries of our India. Now, how many types of government in our country? Did you know? Yes, there are two types of government in our country. First one is central government, another one is state government. And our India is divided into 28 states and 9 union territories. States are governed by the state governments. State में state government की सरकार रहती है and the central governments are governed by the central government. And union territories are governed by central government whereas the states are governed by the state government. जिस तरह state में state government, central में central government, उसी तरह union territories में central government रहती है. Now, the Constitution of India provide for a government at the center and one in each state. Constitution of India, that means हमारे संविधान ने it provides for the government को provide करा at the center and one in each state. हर state में और center में one government. This has been done to govern the country properly.
Why it is so? Because this is done to govern the country properly. हमारी country it will be moved properly. Okay, I think you understood. India is divided into 28 states and 9 union territories. Why it is so? Because our India is so big and it is not possible for a single government to understand and solve the problems of ऑल द पीपल. कोई एक व्यक्ति पूरे देश के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता. दैट इज वाई आवर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स दैट आर कॉल्ड स्टेट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नमेंट. हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इट प्रोवाइड फॉर अ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा एट द सेंटर एंड वन इन ईच स्टेट. हर स्टेट में सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक एक प्रोवाइड किया पीपल. दिस हैज बीन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली. व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट हैज बीन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली. हमारी कंट्री अच्छे से प्रॉपरली वर्क करे इसलिए. नाउ हियर वन फैक्ट वाइज इज दिस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वॉज ड्राफ्टेड, बनाया. किसने ड्राफ्ट करा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने. इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. इसको हमारे इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया. किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू द फोर्स. और वो बाद में लागू हुआ. बना तो 26 नवंबर 1949 में था एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया. वी सेलिब्रेट दिस डे एज अ रिपब्लिक डे. और इस डे को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करने लगे. I think you understood beta. The Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly. Constitution draft किया गया Constituent Assembly द्वारा. It was adopted on 26 November 1949. Which was adopted? Constitution. Our India's Constitution was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 जनवरी 1950. बन तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे 26 नवंबर 1949 में गया था, मगर लागू हुआ पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 में. वी सेलिब्रेट दिस डे एज अवर रिपब्लिक डे. आई थिंक यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. इन दिस वीडियो इट इज इनफ टू यू. मीट यू in the next video. Good day students.